Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well and taking good care of yourself. Well, this is going to be your fourth lesson, and in this lesson, we will discuss chapter number 1 of unit number 6. So, the material required in this lesson is lead pencil, eraser, ruler, highlighter, social studies textbook, or social studies notebook. Well students, as you know that in the previous lesson we have discussed history of computer. In 1946, electrical engineer J. Presper occurred and physicist John Mauchly completed the first programmable electronic computer called ENIAC. In 1980s, companies like Apple and Hewlett-Packard turned the computer into personal computer. We also discussed about easier means of communication and advantages and disadvantages of mobile phone. Here are some learning objectives. By the end of the lesson, students will be able to know about government and how government help us in different ways. Now we are going to start unit number 6, Good Governance. Chapter number 1, What is Government? Take out your textbook, open page number 66, write day, date and today's task at the top of the page. What is government? Government क्या है? इस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है कि गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं? किसी पॉलिटिशियन को गवर्नमेंट कहा जाता है, किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट कहा जाता है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को हम गवर्नमेंट कहते हैं. ओके, आई विल टेल यू अबाउट द गवर्नमेंट. जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक हेड की जरूरत होती है, इसी तरह किसी भी मुल्क को चलाने के लिए हमें एक हेड की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्कूल, कॉलेज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें हेड की जरूरत होती है. इसी तरह एक कंट्री को चलाने के लिए भी हेड की जरूरत होती है. दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, इनमें बहुत ज्यादा लोग हैं, जहाँ भी बहुत सारे इंसान एक साथ रहते हैं, वहाँ तमाम तरह के फैसले और काम करने पड़ते हैं. पूरे मुल्क के काम और फैसले करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत होती है और इस सिस्टम को हम गवर्नमेंट कहते हैं. Highlight or underline the point. The government is a system through which the country is governed. There are many people and institutions in the government. Some of them make laws. Some see that the laws are in place in the whole country, and some see that everybody obeys the laws. If there is a disagreement, some are there to see that there is a fair and peaceful end to the conflict. गवर्नमेंट एक ऐसा निजाम है जिसके जरिए मुल्क पर हुकूमत की जाती है. गवर्नमेंट में बहुत से लोग और अदारे मौजूद होते हैं जो मिलकर इसे चलाते हैं. इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉज को बनाते हैं, कुछ इनको देखते हैं और कुछ ये देखते हैं कि हर कोई इन लॉज को फॉलो कर रहा है, और कुछ लोग लड़ाई को खत्म करने के लिए होते हैं और फेयर डिसीजन के लिए होते हैं कि अगर किसी को कोई बात या किसी को किसी से इख्तलाफ हो या किसी को किसी की कोई बात नापसंद हो तो उसमें फेयर डिसीजन लिया जा सके. Highlight or underline the point. The most important duty of the government is to protect the rights of all the people living in the country. Government is also responsible for the well-being of the citizens of Pakistan. गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी ये है कि उस कंट्री में रहने वाले तमाम लोगों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए. गवर्नमेंट पाकिस्तान के शहरियों की बेटरमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. गवर्नमेंट हेल्प्स अस. हाईलाइट और अंडरलाइन द पॉइंट. गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस. इट प्रोवाइड्स अस विद मैनी थिंग्स which help us to live a better life. Highlight or underline the point. We pay taxes as a fee for the services it provides. The government officials collect that money and spend on public projects like schools, hospitals, etc.
गवर्नमेंट हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। ये हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो हमारी बेहतर जिंदगी गुजारने में हेल्प करती है। जो तमाम सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, हम फी पे करते हैं एज अ टैक्स, जिसे गवर्नमेंट के लोग कलेक्ट करते हैं और उस मनी को पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड करते हैं। स्कूल्स पे स्पेंड करते हैं, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। Here are some examples how government help us. Provides utility, for example, gas, electricity, telephone, water, सुई गैस हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर, ये सब चीजें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि हम एक बेटर लाइफ गुजार सकें। Provides public services, for example, hospitals, schools, parks, गवर्नमेंट हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और पार्क्स बनाती है। डिफेंड्स द कंट्री, द आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी डिफेंड अस फ्रॉम आवर एनिमीज। आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जो लोग होते हैं हमें हमारे दुश्मनों से बचाते हैं। मेक्स लॉज दैट हेल्प्स अस, ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो हमारी मदद करते हैं। एनफोर्सिंग हेल्थ लॉज, सैनिटेशन लॉज, प्रॉपर्टी लॉज एक्सेट्रा। हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सके। सफाई के कवानीन बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टी लॉज और इसके अलावा बहुत से लॉज बनाए जाते हैं। हैंडल्स मेगा प्रोजेक्ट्स like buildings, roads, railway tracks and stations, airports, etc. गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स बनाती है। मैनेजेस डिजास्टर, रेस्क्यूइंग फ्लड एंड अर्थक्वेक विक्टिम्स, बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम्स, ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो हमें सैलाब, जलजले और बॉम्ब ब्लास्ट से बचाते हैं। गिव्स प्रोटेक्शन, हमारी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस, जांबाज, एलीट फोर्स को हायर किया जाता है। सेटल्स डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर, इख्तिलाफ या लड़ाई को खत्म करने के लिए कोर्ट होता है ताकि वहां एक फेयर डिसीजन किया जा सके। Now we are going to start our notebook work as we are doing in our school. So students, grab your stationery and social studies notebook. Students, before starting your notebook work, first write the index as you were writing in the class. First write serial number 4, then write today's date and also write unit number 6, chapter number 1, question answers 1 and 2 in topic column. Well students, this is the title page of unit number 6. You can paste or draw the picture on title page. On next page, you have to write content, reading, vocabulary, question answers, worksheet, class assessment. Write day, date and today's task at the top of the page. Topic, unit number 6, good governance. Question answers. Question number 1, what is the government's most important duty? Why do we need government to protect our rights? The answer is, the government's most important duty is to protect the citizens' rights. We need a government to protect our rights because sometimes people do wrong things. Question number 2. Who are the important people in the national government? Describe their responsibilities. The answer is Prime Minister. He makes all the important decisions of the company after discussing it with the National Assembly. President. The President has to sign on important bills and decisions once they are decided by the National Assembly. Let's have a quick review of today's lesson. We read about what is government, how government help us in different ways, and write the question answers of unit number 6, 1 and 2. Okay dear students, I hope that you understood our today's lesson. So here is a short assessment for you so that you can assess yourself. The blank number 1 is, the dash is a system through which the country governed
Number 2. Government is to protect the dash of all the people living in the country. Number 3. Government is there to dash us. Number 4. We pay dash as a fee for the services it provides. Dear students, try and write down the answer of each of them within 5 minutes. The topic we are going to study in next lesson is a government's most important duty. Dear students, this is the topic that I will teach you in next lesson. You have to go through from this topic. This is the time for task to do. Your task number 1 is make title and content page of unit number 6. Task number 2, learn and write the question number 1 and 2 of unit number 6. Learn to control your anger before your anger dictates the path you take in life. Anger doesn't solve anything, it builds nothing, but it can destroy everything. So, dear students, here are some ways by which you can control your anger. Number 1. When you start feeling angry, try deep breathing, positive self-talk, or stop your angry thoughts. Number 2. Talk to someone who can help you calm down. Number 3. If you feel your temper rising, try and count to 10 to recompose yourself. Well, students, I hope you have understood each and every point of today's lesson. So, inshallah, we will meet in next lesson. Till then, Allah Hafiz.